ओके, सो देखिए, वाटर एक्सप्लॉयटेशन के बाद हमें पता चला कि जब हम वाटर को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं तो उसका कंसिक्वेंस में हमें फ्लड्स झेलने पड़ते हैं. ना व्हाट आर फ्लड्स? Floods are defined as the abnormal rise in the water level of streams or rivers which may result in the overflowing. Now there are three types of floods. Number one, flash floods. Number two, coastal floods and river floods. Flash floods are the sudden large wall of the water that carries rocks, mud, etc. and sweeps. And what are coastal floods? This is due to the offshore low pressure system. River floods due to the overflowing of water in the river. Flash floods जो large wall होती है वाटर की जो आपका रॉक्स और मड्स लेके आती है, और कोस्टल फ्लड्स होते हैं ड्यू टू offshore low pressure system, and river floods is due to overflowing of river in the water. Now what are the causes of floods? Floods के क्या causes हैं? Deforestation in the upper catchment area. Deforestation. Second, prolonged high intensity rainfall generally cause river floods. And third reason, anthropogenic activities like construction of bridges, reservoirs and land use change. तो फ्लड्स के क्या क्या कॉजेज होते हैं? तो देखो, डिफॉरेस्टेशन इन द अपर कैचमेंट एरिया, प्रोलॉन्ग्ड हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जनरली कॉजेज रिवर फ्लड्स, anthropogenic activities like construction of bridges, reservoirs and land use changes. Now what are the impacts related to floods? क्या क्या impacts होते हैं floods की वजह से? Number one, loss of lives. Number two, widespread crop destruction. And number three, associated economic disasters. पहला होता है loss of lives, second, widespread crop destruction, third, associated economic disasters. Next we study about what is drought and what are its causes. Drought is a prolonged period of deficient precipitation which causes extensive damage to crops resulting in loss of yield. The drought is a prolonged period of deficient precipitation, मतलब precipitation यानी बारिश की जब कमी हो जाए, which causes the extensive damage to the crop को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इसकी वजह से. Now what are the causes of droughts? Inadequate rainfall, of course rainfall ही नहीं होती है तो होता है which leads to water scarcity. Next, deforestation which leads to low rainfall. Thirdly, we have a shift in agricultural practices which again leads to low precipitation. And lastly, high water loss due to inadequate water availability. So high water loss due to inadequate water availability. Next, what are the impacts related to droughts? Number one, economic impacts. So droughts lead to an adverse economic impact in agriculture and related sectors, so which are entirely dependent on precipitation. तो बारिश की वजह से जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होता है वो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मोस्टली एरियाज़ ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर पे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं. देन एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है कि डैमेज होता है प्लांट्स को, एनिमल स्पीशीज़ को, लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, और सॉइल इरोजन भी होता है. नाउ लास्टली, सोशल इम्पैक्ट ये कि ड्रॉट्स कैन रिजल्ट इन माइग्रेशन of people that create stress on urban areas due to sudden increase in population leading to increased poverty and social unrest. तो इससे क्या होता है, ड्रॉट्स की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं और जिसकी वजह से पावर्टी को और सोशल अनरेस्ट को बढ़ावा मिलता है. सो इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.